So let's move across and understand the art of presentation. Now, I'm sure to most of us, in fact, if not the entire team out here, majority, after yesterday's discussion, maybe we have shifted a little bit of our thoughts elsewhere. But to most of us, the art of presentation would be where there is one speaker or a team of speakers on a particular stage or an auditorium, or in terms of a facilitation program where training is going on, or it could be an annual sales meet where someone is sharing the presentation on a PowerPoint slide, and there is a host of people surrounding that person. So therefore, this is one thought which came into my first slide. And in terms of presentation also, when we write, maybe a lot of people think when it comes to art, there has to be an artistic form of representation, even in the terms of writing. How far it is right, how far it is desirable is a matter of conjecture and controversy. It might differ, it might according to situations and circumstances. Some others would feel presentation is where somebody is awarded something on account of being excellence or on account of being excellent in something. So it's an excellence award which is given. So that's the art of presentation. Yet others might feel it's a typical facilitation ceremony, which I was mentioning about, a facilitation program where there's a public speaker or an expert in particular area who is discussing or sharing their thoughts. So these are the generic art of presentation which we think of. But now I have a question, and few of you might have heard this, but please bear with me and listen to this. What is presentation and the art of presenting? Is there one place, one single place where we are not presenting? Let's not just think of the conventional verbal communication in terms of presentation. Right? Let us also look at the factor of presenting in terms of the first launch of a particular brand, a brand being launched for the first time, the logo of a particular brand, someone just well groomed and standing in front of you, someone serving a dish of food across on the table in front of you. Are these all presentations as well? So what we're going to do is we're going to move back to our presentation once again and understand what presentation. So I ask you, so the first thing, if you would see, there is a person doing a formal presentation. The next one, maybe a classroom. The third one, maybe again, somewhere in an institute or a college. The fourth one, maybe high school, and then maybe school, and then maybe it's an auditorium. Now, all these in a seminar or a conference, now all these happen to be presentations, right? Conventionally, we would all agree these are presentations. Now, here, there's an examination going on. There is jewelry on display. There is a bride and a groom all dressed up for the occasion. There is a cover of the book. There is a press conference. And now at the end of all this, there is a merchandising of products in a retail store. I ask you, are these presentations? My dear colleagues, learned people from the fraternity, people who are in business, maybe there are students, young professionals in this entire webinar. I ask you, are these presentations as well? Please respond. I will be following your, the chat which you are sending across. So there were a few comments which are coming across. Great, all of us same problem. So voice clarity was not there. Okay, I'll take care of it. I will ensure that audios which are played are audible to you. But as of now, let's focus on this. Are these presentations? Now to go on ahead. How about these? Again, now if you see the first picture on the top left-hand corner of the screen, happens to be a lounge, maybe in a 7-star hotel. The next one happens to be a plush bar. The third one happens to be an airport terminal. The last three happen to be food served on a table. The fifth one, which is the one bottom center, happens to be an office premise.
and the right one, two formally dressed colleagues walking past. Now I ask you once again, are these presentations as well? Please give it a thought. And finally, a cover of a book, the Sydney Harbour, a bouquet of flowers, a dance recital, a store in an exhibition, and finally, your visiting card. How about these? Now you have to tell me, are all these forms of presentation? And if it is, then why is it that when it comes to presentation, we only talk of verbal communication where somebody is talking to someone? And if we're not so, if all of this happen to be presentation and we are so aware of it, not conscious about a presentation which is being verbally done, and if it is a presentation which is normally happening all the time, because whatever we saw proves that every single time we are presenting, unless maybe when we are asleep, we are always presenting in some form or the other. Even when we are going to the supermarket to buy grocery, which we are doing very often now, because that's all that we can do under a lockdown circumstance. So again, to get back to our topic, get back to our area of discussion, tell me, isn't presentation something which we are always doing? I would like responses on that, so that there is some form of consensus basis which we will go forward. Just wanted to check with everyone. Okay, Satish likes. Thank you, Satish ji. Thank you for liking what I said. But do you agree? Do you agree that at some point or the other, we are always presenting? Yes, says Vishal. Yes, says Satish. Thank you so much, Vishal ji. Thank you, Satish ji. And anyone else? Any thoughts? Anyone who chooses to disagree with me? Oh, I completely agree, says Kali Prasad. We never thought, says Satish, about these dimensions. Wonderful. Now we've started thinking, and that's the idea of this entire workshop, is we will widen our horizon, think in terms of the various dimensions in which presentation happens. Presentation is not something which is very limited. Presentation is something which is huge, which is wide, and which is a major factor in our lives. It creates a huge impact. Swati says, yes, when we do formal presentation as a speaker, but informally, everything is presentation. Thank you, Swati, for sharing that. Yes, whether formal, whether informal, we are always presenting. Remember, when you are with your spouses, you are actually presenting. Please present your absolutely best person possible. Don't try to be too righteous. I'm a married person telling you, don't try to be too righteous. Don't try to be right. Try to be happy. And the secret of happiness is presenting yourself in the right way. Yeah. So, Satish is vowed. So that was just a thought. That was just a joke. But yes, it does work. People who are not married won't find it. But please consider this to be a tip from a 50-year-old person who is enough experienced on these lines, right? So now coming back to presentation, remember we started our presentation with our elocutions in school in front of the teacher. We started our presentations with debate in school in front of the teacher. We went on and graduated to presenting in an interview, then graduated to presenting in our workplace. And then some of us chose to become entrepreneurs and started making presentations when we went for our first investment from the venture capitalist or taking a loan from the bank. So every single time we have been presenting. But before that, while we are going for this presentation, we carried our business card. Wasn't that a presentation? We dressed ourselves formally. Wasn't that a presentation? We created an office place for ourselves, which people would walk into. Was that office place design not also a form of presentation? We created a website. Isn't that a presentation? We created our own logos. Isn't that a presentation? We whistle in which way? Isn't that a presentation? There is a way in which we walk. There's a way in which we talk. There is a way in which we wear the tie. So every single thing is a presentation. The way I am speaking to you right now is a form of presentation. In the same way, if I were to speak to children of a particular class, probably they would not be able to understand because their levels of maturity would be different. They would not be able to identify with me.
We are speaking to young adults here and adults who are matured enough. Therefore, probably this is the way to relate to them in terms of kinesthetic learning. Somehow not going through it. I believe, and please bear with me, but I believe it has to do with the network at my end, or could be network at any end. Let me tell you, I have the full complete network in process, and I have tested this a short while back. But somehow the videos are not going through. I believe when the normal presentation is running and when I'm speaking to you, I am loud and clear. It's audible. Just write down yes or no in the chat so that I know that at least when I'm speaking to you, it's clear. Oh, thank you. Thank you, Satish. Thank you, Kali. So which means it means there is some kind of a technical glitch in terms of the network when the videos are being shown. So thank you so much. Thank you, Rajshekar. Yes, it's clear. Thank you, everybody. Thank you, Ashish ji. Thank you for joining once again. So we will continue with our discussion. So what I started to share is the two P's. Unfortunately, the two P's and the third P is something which is clear with others. So we will not move into the audio or the video, but we will cover and understand what are the P's. So first, some thoughts about presentation. Now, some of these thoughts I have got from my colleagues, right? Presentation is something which is considered to be a universal phenomenon. So I will, before, I show you the slide, I just wanted to speak to you. So please hear me out. Some think presentation is a universal phenomenon which is covered everywhere. It has got limitless potential. It is to do with even basic etiquettes, what we wear inside out. Then it has to do with individual thought processes. It has to do with it conveys through thinking, gesture, feelings, personality. It is something which is seen in interviews and client interface, through vendors, social groups, team members, so on. So I would share this with you, and I would like you to go through it, and I would want your thoughts on the same. Again, this is something which is very, very common, but yet I thought that we should share it amongst us. Right. So I won't insult your optical abilities by reading the slide out to you. All of you can read. It's a host of thoughts and ideas. Some of you, I believe most of you would agree to most of it, if not the entire part of it. But these are mostly conventional thoughts. And I tell you, it's nothing wrong. But if you go to 1, 2, 3, 4, 5, and the sixth point, which starts with walk, talk, move, present a decor hotel lobby to a provision store, that could be a point where a lot of people would start thinking, okay, so is that a presentation too? Now you tell me, do you not get affected by it? Do you not get impressed? Or do you not detest if something is not placed in front of you in the manner in which you desire? Which means that's a presentation too. So I just wanted your thoughts on this. You can write on your window. Presentation is hand in hand with effective communication, says Vaibhav. I agree with you. You can share those videos in the WhatsApp group, says Satish. Of course, I will do and share those videos. Do not have to worry. You will get access to all the videos and the audios. You will get access even to the PowerPoint. But let's focus on this, on the thoughts and the presentation. And I would, since you've gone through it, now the question, I would want your ideas to please share your thoughts. Of course, the only way you can share your thoughts is through the chat window, and it is not limited to anyone. I'm sure we are all comfortable with chat. So your thoughts on the thoughts on presentation. We'll go ahead. We are well on time, so nothing to worry. So I am assuming that we are agreeing with these thoughts. So we will proceed to the next one. And the next idea is the 3 P's. And this is precisely what was being shared in the audio. So the first P is purpose. Now, if the first P is purpose, let us understand what is purpose. Now, when it comes to purpose in terms of a presentation, let us take an example of a person going for an interview. Let us take an example of a person who might be going for a startup.
Let us take the example of a person who is quitting a job to join his father's business. Let us take the example of a person, better expression of the content along with a positive attitude. Okay, thank you, Weber. So let's take the example of a person who is owning a hotel and is in charge of the entire arrangement of food for a guest list of 250 people of the elite category. Now, why I say elite category? Maybe celebrities and celebrity sons reception ceremony is happening. Now, what kind of presentation that person would be doing? How would the lobby be decorated? How would the dining area be decorated? How would the center food table look like? How would the the dress or the attire of the people who are serving would look like? What would be the food menu? What would be the kind of items which will be served in terms of the cuisine? So all these and many more. Yes, I agree, Vishal. Selling your ideas, presenting is to getting attention, effective communication, acknowledgement for your thoughts. Completely agree with Vishal. Thank you so much for contributing. Yes. Now, so are these also not part of the presentation? Yes. Now, since all these are part of the presentation, so my next question to you is, there are two purposes which I stated. Now, let us talk of purpose of presentation, a very typical one, very old school one. Some which many of you will not would probably think that this is something which rarely happens. But what is when there is a new car which you have bought, a new car, a new automobile which you might have bought, and you are doing the opening of that automobile. Now you will say this is very old school, old fashioned. आजकल बहुत कम लोग करते हैं ना सर, काफी लोग करते हैं, मान जाइए काफी लोग करते हैं. नया गाड़ी खरीदते हैं हम लोग जो ए कैटेगरी सिटीज में रहते हैं, हम लोग बोलते हैं गाड़ी खरीदना, उसको इतना वो शोर शराबे से हम लोग थोड़ी ना इसको करते हैं, बट करते हैं. यस वैभव, थीम ऑफ द ओकेजन. तो यहाँ पे थीम क्या हो गया? गाड़ी हमने खरीदा, मान लीजिए गाड़ी एक होंडा ले लेते हैं, ठीक है. लेट्स टॉक ऑफ अ होंडा. वी बॉट अ होंडा कार, राइट? प्लश, लुकिंग नाइस. नाउ हाउ विल वी प्रेजेंट दैट कार इन फ्रंट ऑफ पीपल? उसको सजाएंगे, काफी सारे लोग हैं, मैं जानता हूं, आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे उसका. गाड़ी खोलने से पहले एक टेस्ट ड्राइव तो कर लेंगे, लेकिन गाड़ी खोल के पहली बार चलाने से पहले फैमिली के साथ पूरी तरह से उसका पूजा करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, बकायदा उनके साथ उसका आरती के बाद यो टीका भी लगाएंगे, गाड़ी को भी टीका लगाते हैं, and then they will do it. Now, why do you do this kind of a presentation? Ribbon, puja, music. Absolutely right, Vishal. Ribbon, puja, music. Thank you so much, Vishal, for contributing. Thank you so much. So now, excuse me. So all these things are being done. All these things are part of the presentation. My point is, what is the purpose? So everywhere there is the purpose. That's the first P. Now, from purpose, we move to the next one, and that happens to be preparation. Now, with every purpose, there is a preparation. What is a preparation? So I will take another example. If there is a particular person who is going for an interview, 7 to 8 years of working experience, let's assume that person is from the retail industry. Let's even take further, 7 to 10 years of work experience. So what are the kind of preparation that person would do? What's the purpose? The primary purpose, the underlined purpose is that person has to get a new job. But what is the inherent purpose? The inherent purpose is the person is in a particular profile currently. When that person moves into a higher role, he or she will get a bigger territory of work. The role will change, the team size will increase, the responsibilities will increase, and therefore, in terms of status, socioeconomic balance, in terms of his or her esteem, is going to put that person on a higher pedestal. So that's the inherent purpose. So now we know what the purpose is, which is the first P. Now comes, basis that purpose, what will be preparation, which is P number 2. Second P, very critical. Now, what will we prepare on? If there is a new organization which I am joining, I will try and find out about the organization. I will try and find out how it matches with what I am, where I am, what kind of a brand I am, what kind of an image I have, and how that image could match with the values, the missions, even if possible, the vision of the organization which I am trying to join, the kind of role which I'll be taking care of, and how my current role matches with that. Absolutely right, Web of Work Culture. Ravi Kumar ji, thank you so much.
So if I know, yes, I could say it is Rolls Royce. Okay, okay. Weber feels it could be Rolls Royce. Okay, Rolls Royce competes. Yeah, thank you so much, Weber. Right. So coming back, he's saying knowing the expectations of each other. Yes, but before that, I would try to assume the expectation of the interviewer and the organization where I have been asked to appear for an interview. So what would be the expectations there? The primary expectation of the people there would be on the lines of how I would be able to add value to the organization. How will I showcase that? Not just by saying, primarily, it has to be there on my resume, because in order to get shortlisted, my resume has to be prepared on those lines. Therefore, I will have to do my research on the organization and try and find out. Now you will say, where is the presentation? I have not even gone for the interview. Sir, the first presentation is a visual presentation. The first visual presentation is a profile which you are sharing across with them. It could be a visual profile, it could be a literally recorded profile in nowadays for a senior position which we are sending across. Now when you talk on those, how you talk, how you present yourself, how mature your ideas are, how pragmatic your thoughts are, how they are in line with the expectation of the organization, कितने organization के values और mission के साथ आपके जो प्रोफाइल है और आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो तजुर्बा है, कितना वो मैच करता है, उसी बेसिस पे ये सब दरमदार है कि आप वो जॉब पाएंगे, मतलब अव्वल आएंगे, क्लियर कर पाएंगे या नहीं क्लियर कर पाएंगे. ये सारी चीज अफेक्ट करती है उस चीज को. नौकरी इज सेलिंग प्रोडक्ट्स इन सेम लाइन. ओके, stability with my skills with the organizational needs. Absolutely agree, Vibhav. Stability with my skills with the organizational needs. Absolutely, I agree. You are absolutely right on those lines. So these are expectations which are required by the in the profile where I am joining. Right now, my next question to all of you is, what would be the preparation? I told you about the research work. What would be the other kind of preparation? Please share. Thank you, Satish ji. You have said what is the third P. I'll come to that. Hold your gun. Hold your gun, Satish ji. I'll come to the third P. But let us understand preparation. I will tell you, if you go wrong with P1 and P2, third P होगा ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है. वो थर्ड पी के बेसिस पे सारा होता है एक्चुअली. लेकिन क्या होता है ना, हम लोग थर्ड पी के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन थर्ड पी में आएंगे. Good, I thought we are in the third P. No, no, no. Satish ji, we are on the second P. As I repeat, the first P was purpose. The second P is preparation. You are preparing according to the purpose. And when I tell you the third P, you will know how we step back and come to each P. Right. So now the question to all of you once again, what other preparation will I do for an interview? I told you the profile, 10 years. He will research on the organization, maybe look up the website, maybe find out about the job. What else? Somebody mentioned organization culture. Anything else? Anything else? Right. So it seems that we are organization history. Okay, okay, okay. Third P is presenting yourself. Vishal thinks, yes, but more than that. Yes, Vaibhavji, making a profile which makes the organization interested. Absolutely. Compensation, knowing the people. Fantastic. Ravi Kumar ji has said something. On LinkedIn, we try to get in touch with people. LinkedIn is a social networking site. All of us know that. It's a professional social networking site where we network in order to get connected to people of the professional world. Now, when you get connected there, you get references, you get to know the culture of the organization. And at times, if you're well connected, you even get referrals. That helps big time. So these are all part of the preparation. We could go on and on for this, because this itself, preparation is one P, which itself will cover 2 to 3 complete sessions of at least 2 hours each, at least. But we will not do, because here we are in a concise program. Empathy of the hiring team, fantastic. Those are good things. Empathy सुनने में भी मजा आता है. Now we will बेचैन हो रहा है, सतीश जी भी बेचैन हो रहा है, तो रवि कुमार जी भी जानना चाहेंगे. तो मैं बताता हूँ थर्ड पी क्या है. थर्ड पी सर एक्चुअली कुछ नहीं बट है हमारा, बताइए क्या है? पोजीशनिंग. द वर्ड पोजीशनिंग इज अ वर्ड जो कि फिलिप कोटलर के किताब में, मार्केटिंग की कोई भी किताब में बहुत अहम तरीके से समझाया गया है. और पोजीशनिंग एक ऐसा शब्द है जो जाती है ब्रांड वर्ड के साथ. सो ब्रांड पोजीशनिंग आर 2 वर्ड्स विच गो हैंड इन हैंड. ब्रांड पोजीशनिंग. तो आप बताएंगे मैं तो इंसान हूं भाई,
मैं प्रोडक्ट थोड़ी ना हूं, मैं ब्रांड कैसे बन गया? सर ऐसा मत बोलिए। आप लोग सारे जानते हैं, हम लोग कोई फिल्म स्टार के बारे में बोलते हैं, हम लोग कोई दिग्गज पॉलिटिशियन के बारे में बोलते हैं, हम लोग कोई ग्रेट बिजनेसमैन के बारे में बोलते हैं, हम लोग कुछ एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन के बारे में बोलते हैं, हम लोग कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में बोलते हैं, तो हम ब्रांड नहीं बताते उनको? क्या हम सिर्फ कंपनी को ब्रांड बोलते हैं? हम इंसान को भी ब्रांड बोलते हैं। तो इसका इसका मतलब क्या ये है कि हम भी ब्रांड बन सकते हैं? बिल्कुल हम लोग ब्रांड हैं, बन सकते नहीं, हम लोग ब्रांड हैं। अब हम लोग नामचीन ब्रांड है या हम लोग नामचीन ब्रांड नहीं है, ईच ऑफ अस हैज ब्रांड इक्विटी। बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बता, लाइक अंबानी इज अ ब्रांड, बिल्कुल काली प्रसाद जी एकदम सही बताया आपने। सेलिंग आवरसेल्फ, सतीश जी बोल रहे हैं, पीपल कैन डू द पोजिशनिंग बाय द एक्स। रवि कुमार जी, एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली एग्री विथ यू। विथ आवर एक्स वी position ourselves, just like you have done till now. I hope I have been able to position myself in the way I wanted to or desired to. But that is a feedback which will come at the end of the session from you. Thank you so much. But yes, you have a brand equity. I'll tell you very simple. आज हमारा जो क्रेडिट कैपेसिटी है उसका भी एक हमारे ब्रांड इक्विटी के साथ कनेक्टेड है। आज के दिन में इतने सारे चीज खुलासे से पता चल जाता है। सो टुमारो इफ वी हैव ह्यूज डेट्स or we are not good taxpayers, we get caught. We get caught eventually. Even the biggest frauds are getting caught nowadays, somehow or the other. And that contributes to our brand equity, either in a positive manner or in a not so positive manner. So there are the 3 P's which we have spoken about: purpose, second P is preparation, and third P is positioning. So we'll move to that slide to understand that, which is a reiteration of what we have discussed till now. So the first P was purpose, which is why. So the question which will come to our mind is why we will do what we will do. The second P is what, how, and when we will do. And the third P is positioning. How do I want to be perceived as? तो एक्चुअली शुरुआत इस परसेप्शन से होती है, हाउ डू आई वांट टू बी परसीव्ड एज से शुरू होती है। हम पहले सोचते हैं कि अपने आप को ब्रांड बनाएंगे, कल को लोग मेरे को देख के ऐसा बोलेंगे, मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। तो इस चीज की चाहत हम में जैसे बढ़ती जाती है और इसकी छवि जब हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती है, समा जाती है, तब हमको पर्पस की क्लैरिटी मिल जाती है। और जब हमको पोजीशनिंग की वजह से पर्पस की क्लैरिटी मिल जाती है तो हम अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। और तैयारियों में क्या होते हैं? प्रिपरेशन इज द की। व्हाट, हाउ, when. These are the 3 things which we prepare then. So these are the 3 P's which I wanted to talk to you about. Now, how do these P's create impact? तो impact तो होती है भैया। effective presentation, चाहे वो जिस किसी ढंग की presentation हो, चाहे verbal हो, चाहे non verbal हो, चाहे inanimate हो, पहला चीज जो होती है, बिजनेस टॉप और बॉटम लाइन को अफेक्ट करती है। हाँ भैया, हमारे कस्टमर्स बढ़ सकती है, हमारी जितने भी कस्टमर हमारे बढ़ेगी तो हमारी टॉप लाइन बढ़ती जाएगी, हमारी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। और जितना ज्यादा मार्जिन हम रख पाएंगे, जितना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, क्योंकि वैल्यूज ऑफ सेलिंग टू मोर एंड मोर पीपल, तो हमारे बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट्स भी बढ़ सकती है। दिस इज ट्रू फॉर एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो हमारे टॉप और बॉटम लाइन को अफेक्ट करती है हमारी प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से 6 साल पहले आप में से मेरे को बताइए कि बायजूस के बारे में आप में से कितने लोग जानते थे? मैं 100% लोग, मैं बोल सकता हूं 100% लोग शायद नहीं जानते होंगे, या फिर सुने होंगे, बस उससे आगे कुछ नहीं जानते थे। व्हाट इज बायजूस? So if I were to ask all of you, most of you would have said Byju's is something which we have not heard too much about, right? We have not heard too much about. Okay, Swati says she's not understood what positioning is. We'll come to that. Vaibhav says integrity, honesty, precision. Okay, Swati, yes, I'll come to you on positioning. I'll come to you. Ravi Kumar ji has mentioned few books on positioning, Battle for Your Mind. Thank you so much. Yes, Jack Trout. Yes, absolutely. Those are books, but beyond that, Swati ji जो जानना चाह रही है शायद कि in simple language what positioning actually is. We'll come to this after we have completed this slide. So now moving on. ये पहला चीज है। तो कल के दिन अगर बायजूस के कस्टमर बढ़ते गए तो नेचुरली उनके टॉप और बॉटम लाइन बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट बढ़ता गया। तो उनका प्रेजेंटेशन जो है, जितने लोग तक वो पहुंचे और जितनी खूबसूरती से वो छा गए, तो आज के दिन दे हैव बिकम अ स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। नाउ दिस इज हाउ
their effective presentation of their ads, their product, how they have tried to sponsor certain programs has caught the imagination of people. And now today, Byju's have become a player to reckon with. Next, with clients or stakeholders, यानी कि जो हमारे clients है, हमारे customers है, हमारे partners हैं, हमारे vendors हैं, हमारे supporters हैं, हमारे suppliers हैं, उनके साथ हमारे relationship जो है, relationship बहुत strong बन जाती है. वो एक होती है impact of effective presentation. फिर वर्कप्लेस, जहां पे हम लोग काम करते हैं, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम सर्विस में हो, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है ऑटोमेटिकली, हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ जाती है. अगर काम हम अच्छा करते हैं, मान लीजिए हम नौकरी में अच्छा काम करते हैं, हमारे टीम मेंबर्स के साथ मेरा पैनापन, मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया से बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर गेटिंग मोर एंड मोर कनेक्टेड टू आवर टीम मेंबर्स, वी आर डूइंग वेरी वेल विद आवर टीम मेंबर्स, वी हैव अर्न्ड देयर रिस्पेक्ट, वी आर शोन मैच्योरिटी, वी आर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स and we are showing leadership capabilities. Therefore, it is most likely more than one, we will get growth in our careers, we will get growth in our business, we will get growth in our area of work. In fact, even in life, in our relationships with our friends, our family members, owing to this respect, our relationship will take a growth. सो सोशली ऑल्सो ये चीज अफेक्ट होगा, हमको रिस्पेक्ट मिलेगा, रिलेशनशिप मिलेगा, और इस वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस को इंपैक्ट करेगी, पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी. नाउ व्हाट वी विल डू फ्रॉम हियर इज वी विल स्टॉप शेयरिंग Swati because that was an expectation she shared what positioning is, and I will clarify that before moving on further because we need to understand. It was a concept, Byju's, yes, how to do that positioning, marketing. Now they have proved their importance. They are truthful in what they deliver. Absolutely, Vaibji. I will not go into the fact of saying that they are truthful in the fact they deliver because I'm not a user of Byju's myself. Might or might not be. I'm sure they must be doing pretty well and they must be having a good feedback. This was just a one-off example. We are not here to promote any kind of brand or do any kind of marketing on behalf of anyone, but that was just a one-off example. Right, so you can take any example, whether you take an example of a Sony or an Adidas or a headphone or a washing machine or anywhere which we go, the presentation is very, very important. Now the question of positioning which we were about to discuss, and Swati ji, this is especially for you and others who might want to relook into positioning है, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मैं क्या यहीं पे बैठा रहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बाईं और जाना चाहूंगा, बाईं ओर. तो यहां से बाईं ओर तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है. तो बाईं ओर क्यों जाना है, पहले ये जानना है. बाईं ओर में एक बहुत खूबसूरत पहाड़ है. देयर इज अ वंडरफुल वेकेशन स्पॉट विच इज 120 kilometers from where I am, and it is to the left. It is to the left, to my west. So I'll have to go west. Now, in order to arrive to that west, from this position to that position, what are the things which I need to do? Now, that is a very layman way of explaining positioning. Now, when it comes to any form of brand, any form, जो कि individual भी, वो भी brand है, वो हम लोग सब establish कर चुके हैं. हमारे जितने भी भाई बंधु है, all my team members here, all my the trainees here have all agreed with that. So let us come to what is exactly positioning for a brand. Brand wants a certain perception या image. वो चाहते हैं कि हमको इस ढंग से परसीव की जाए, लोग हमारे बारे में ऐसा बोले. एग्जाम्पल, इससे बढ़कर सफेदी और किसी चीज में नहीं. मे बी इट्स द काइंड ऑफ अ फीडबैक which they expect out of their fairness cream. इससे बढ़ के सफेदी और किसी में नहीं, ये चाहिए उनको फीडबैक के तौर पे. अगर ऐसा फीडबैक उनको चाहिए तो कैसा प्रोडक्ट उनको बनवाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट बनवाने के लिए कैसे टारगेट सेगमेंट के पास उनको जाना पड़ेगा, उस टारगेट सेगमेंट के लिए कीमत कैसा रखना पड़ेगा. तो यानी कि कितनी जगह पे प्रेजेंटेशन है. प्रेजेंटेशन अपनी लोगों की है, प्रेजेंटेशन अपनी वेबसाइट की है, प्रेजेंटेशन अपनी प्राइस की है, प्रिपरेशन ये सब चीजों की है. प्रेजेंटेशन इनको बार बार अलग अलग जगह पे करना पड़ रहा है. अपने प्रोडक्ट का अलग अलग जगहों पे वो अपने प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन करते जा रहे हैं. It is not just the verbal communication, it is the non-verbal communication also. It is not just television advertisement, electronic media advertisement or print media advertisement through which they are touching. Big brands have to compete by sale phenomena to meet competition, building brand with purpose. Let us talk about apparels. Absolutely right.
who had done the position. So now Ravi Kumar ji भी बता रहे हैं apparels के बारे में हम लोग पूछते हैं, apparels के बारे में सोचते हैं. Yes, पोजिशनिंग करने के लिए पोजिशनिंग कौन करेगा? एक इंडिविजुअल का पोजिशनिंग इंडिविजुअल खुद करेगा. हो सकता है इंडिविजुअल किसी और के साथ बात कर ले, हो सकता है वो एस्पायर करे, हो सकता है कि कोई ऐसा पब्लिक स्पीकर हो. मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, राइट? I'll just give you a brief introduction of myself at the end of the program. I thought I should jump into the program primarily because there is enough of me which has been written about in the notes in the WhatsApp. So I thought I need not introduce myself, which I'll do briefly in the end. Now the point here is, now where I stand in terms of my own experience to where I would want to be perceived. मेरे को कैसे लोग देखते हैं आज से 4 साल या 5 साल बाद, वो मेरी पोजिशनिंग होगी. तो मैं उस पोजीशनिंग करने के लिए, उस पोजीशनिंग तक पहुंचने के लिए, अपने ब्रांड को पहुंचाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या क्या चीज मैं प्रिपेयर करूंगा. तो यहां पे मेरे को पर्पस मिल चुका है कि उस पोजीशनिंग तक पहुंचना है. तो वो ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए मेरा स्ट्रेटजीज क्या होगी, क्या क्या चीज मैं अपनाऊंगा, क्या क्या चीज में मैं तैयारी करूंगा, कैसे अपने आप को पेश करूंगा, कैसे अपने आप को और बेहतर बनाऊंगा, कैसे अपने आप को तराशूंगा और लोगों की आंखों में. So that is what is positioning. So Swati ji, I'm sure you must be listening to me. Thank you so much, Swati. Got it. So thank you. So now it's very clear. So we'll proceed further. So in order to proceed, I'll just share the screen to the team once again. Thank you so much for being so participative. Which I was there in WhatsApp is slightly silent because there are some of the things which are familiar to them. So now we'll come to a part which is modus operandi, and this is one part, this is key for the entire team. Now what is modus operandi? Manner of doing things, a certain way of doing a certain thing. एक particular ढंग से काम करना, तो वो क्या है? प्रेजेंटेशन की modus operandi क्या है, पहले देखते हैं. एक है ये लेफ्ट में जो कि वर्बल, और एक है ये राइट में जो कि नॉन वर्बल. तो आगे बढ़ते हैं. पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, मैं ऑडियो में नहीं जाऊंगा, मैं ये आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं. और प्रेपरेशन, पर्पस ऑफ प्रेपरेशन हम लोग समझ चुके हैं. तो पहले मोडस ऑपरेंडी में समझते हैं वर्बल. तो वर्बल में की एस्पेक्ट्स क्या क्या होती है? क्लैरिटी, हमारी जो सोच है, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज क्लियर होनी जरूरी है. तो मैं आई जस्ट कम बैक वंस अगेन एंड ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. ये बहुत जरूरी है कि हमारी सोच और हमारी एक्सप्रेशन, ये सिर्फ वर्बल के बारे में बोल रहे हैं, सोच और एक्सप्रेशन दोनों मैरिड होनी चाहिए. कोई सेपरेशन नहीं होनी चाहिए इनमें, डिवोर्स नहीं होनी चाहिए, एकदम एक दूसरे से अलग भी नहीं होनी चाहिए. जैसे वो हो जाएगी तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें पैनापन नहीं रहेगा. तो क्रिटिकली सोचना है, क्रिटिकली एक्सप्रेस करना है. दोनों की पैनापन के साथ जब हम पेश करेंगे, देन इट बिकम्स वेरी क्लियर टू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो थॉट्स and expressions have to match. Now coming to 7 C's, ये बहुत common सी चीज है. Content, clarity, crystal clear, then we talk of concreteness, conciseness. These are the 7 C's, right? We will not spend too much of time. This is a little college boyish kind of a thing, but these are the basics. So I'll share those thoughts with you, but the 7 C's have to be there. Whatever we share in verbal has to have, उसमें पर्पस होना चाहिए, लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. और साथ ही साथ हमको बहुत क्लैरिटी इस चीज में होना चाहिए कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस ढंग से करना है. दैट मीन्स व्हाई आई एम डूइंग, व्हाट वी विल बी डूइंग एंड हाउ वी विल बी presenting ourselves. Now this will change with the purpose of the presentation, whether this presentation is a presentation in front of principals or top institution, whether this presentation is front of women in the age group of 40 to 60 and I am speaking to them about domestic abuse, there is one type of presentation. Whether I am speaking to my colleagues who are women colleagues about prevention of sexual harassment at workplace, that is another kind of presentation. Whether I am speaking to children in school and telling them about sanitation and discipline at school and institution, that's a different kind of presentation. See, the age group changes, the sensitivities changes. Now I am speaking to a group of women above 70 about how to not be depressed when you are alone and left away by your family. Now that is another kind of presentation.
तो ये हर एक प्रेजेंटेशन के लिए मेरा कंटेंट चेंज होगा, मेरा बात करने का ढंग चेंज हो जाएगा, मेरी भाषाओं में चेंज आएगी, मेरी जो स्लाइड्स है, मेरी जो टोटल प्रेजेंटेशन करने की प्रक्रिया है, पूरा चेंज हो सकता है. बेसिस लोकेशंस एंड डेमोग्राफिक्स, माय लैंग्वेज माइट चेंज, मेरा पहनावा बदल जाएगा, मेरे लीफलेट्स बदल जाएंगे, मेरे कोलैटरल्स बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएंगे. Right. So again, so the basics have to be very clear. Now, as you see, everywhere there is preparation. Whether we agree or not, I just sincerely hope that we have all started agreeing. If you are looking at branding, presentation is the backbone. Probably you now realize we talk of brand, and we think इसमें presentation थोड़ी ना, यहाँ पे थोड़ी ना हम slide बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी ना हम लोगों के सामने जाके बातचीत कर रहे हैं. भैया, बगैर बातचीत का भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे अनजाने में हम प्रेजेंट कर रहे हैं. अब हम खड़े हैं तो ऐसे दीवार पे हाथ रख के खड़े हैं, तो वो भी भैया प्रेजेंटेशन तो हो गया. और अगर मान लीजिए आप कोई नामचीन ब्रांड के हो और गुटखा खाते हुए इनके ऑफिस में घुसते हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, क्या वो एक एमएनसी के गुटखा खाने वाला सप्लाई चेन मैनेजर उतना रिस्पेक्ट पाएगा? आई डोंट नो. दैट्स अ क्वेश्चन आई एम पुटिंग फॉरवर्ड. नाउ दीज आर स्मॉल थिंग्स, राइट, depending on the audience profile. So I told you, everywhere it is getting affected. So whether you smoke or you have habits which are actually not desirable to most people, now these are things which might not be appreciated by the majority of the people. Whether they themselves smoke or not is different, but at the end of the day that will not get appreciated. So I gave you just one example, so that is also part of a presentation. If I'm a smoker, again, smoking cannot be universally called to be good, right? Because it's harmful for health. It is accepted fact. So again, it's something which when we are displaying in front of people or which we are showing in front of people with the brand name here, the name tag here, what is the kind of signals which I am sending across, unless you are in that kind of an association. So these are all facts which we have to be very careful. I am wearing some these. Now this is also carrying some kind of a signal, whether I want to create that signal or not, but indirectly I am sending across a signal, right? Maybe that is not the signal which I intend, but but I'm definitely sending across a signal, right? So consciously or unconsciously, every time through we are present and we are establishing our brand. So that was the part of verbal. Now coming to the non-verbal aspect. Now the non-verbal aspect is something which we are all familiar with. I will show you the non-verbal aspect so that area is also clear. The non-verbal aspect is to do with the grooming, the body language, the voice, the posture, gesture, and there also the why, what, and how is very important. But the most important factor here is the purpose, facts, and vision. तो हम अपना हर एक तकिया कलाम जो बोलते हैं, हमारे हर एक तकिया कलाम, हमारे हर एक मैनरिज्म, हमारे हर एक इवन अनकॉन्शियस स्टेप्स को भी अपने दिमाग में रखते हुए we will put our steps so that nothing goes wrong, because everything is critical. Everything, even how our visiting cards look, that actually represents a brand. So we'll come to something which the other day somebody was sharing, to me was funny. I do not know whether you will agree with me. That person said we are a startup, okay, education company hai unka. Of course I'm not going to name that person, very close to me, right? And I felt surprised, but he's a friend and I was very very frank with him, very close friend. तो उन्होंने बताया, यार मैंने क्लासरूम तो सजा लिया, क्लासरूम में एसी भी लगा दिया, बाकायदा नया चेयर्स लगवा दिया, व्हाइट बोर्ड लगवा दिया, कुछ दिन हो जाए तो उसके बाद मैंने वो एक टेस्ट प्रेप ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन टेस्ट प्रेप. कैसा टेस्ट प्रेप है वो जानना हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है, सो आई एम नॉट मेंशनिंग दैट. सो दे आर इनटू टेस्ट प्रेप, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं और उनकी कोचिंग देते हैं. तो बोला कुछ दिन बाद हम एसी तो लगवा लिए, फैन लगवा लिए, चेयर्स नए हैं, व्हाइट बोर्ड है, कुछ दिन बाद हम लोग प्रोजेक्टर भी लगवा देंगे. तो हम लोग का तैयार हो गया, क्लासरूम का डोर लग गया, ये प्रेमाइसेस में डोर नहीं था, मैंने शीशे का डोर लगवा दिया. अब रिसेप्शन एरिया थोड़ा अच्छा नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लोग तो रिसेप्शन एरिया देखने के लिए नहीं आएंगे. और जो ये सेंटर मैनेजर का रूम है वो भी बढ़िया नहीं है, लेकिन थोड़ी ना सेंटर मैनेजर से मिलने के लिए लोग आएंगे, लोग तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आएंगे. तो पेरेंट्स जब आएंगे एडमिशन लेने, अब उनका सेंटर का साइज जो था वो 650 स्क्वायर फीट है, उसी के अंदर उनके 3 कमरे हैं, एक लॉबी भी है, लॉबी के बगल में एक स्टोर रूम भी है, स्टोर रूम के बगल में एक टॉयलेट है, बस यही है पूरा सेंटर. अब सेंटर में स्पेस कम है
और अगर सेंटर में आप दाखिला लेते हो सब कुछ दिखता है आपको। अगर दरवाजा भी लगवा लोगे फिर भी आपको एंटर करते वक्त आप सेंटर मैनेजर के रूम के बगल से एंटर करोगे, यानी कि सेंटर मैनेजर का रूम दिखेगा। और सेंटर मैनेजर के साथ रूम के बगल में लगा हुआ है काउंसलर्स रूम। तो यानी कि काउंसलर्स रूम और सेंटर मैनेजर रूम में ना है प्रॉपर एसी और ना है कोई डोर, बस एक आधा पार्टीशन है, यानी कि सब कुछ दिख रहा है, राइट? Now you are saying the student will come along with the parents and take admission here and then move to the classroom, which is fantastic looking. It is not fantastic, but it's okay. It's good, reasonable. तो क्या जरूरी है, वो लोग तो पढ़ाई करने आ रहे हैं। पॉइंट इज, जैसे हमारे वैभव सर ने लिखा है एंड कैलाश हैज आल्सो रिटन दैट विल यू बी शेयरिंग, अच्छा कैलाश हैज आस्क्ड विल यू बी शेयरिंग द कैलाश जी दिस प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड, this presentation will be shared with you. Tushar says self presentation is important. Agree. Vaibhav says a chocolate in a good wrapping sells on a good price, not otherwise. Completely agree with you Vaibhav ji. और यही बात मैंने अपने दोस्त को बताया कि भैया आप जो बता रहे हैं ना, आपका पैकेजिंग सही नहीं है सर। पहला तो एडमिशन वो लेंगे इस रूम में आके, अब जो रूम में आके वो लोग एडमिशन लेने वाले हैं, वहां पे काउंसलर को मीट कर रहे हैं, वहां पे एसी सही से काम नहीं कर रहा है, वहां पे दरवाजा सही से नहीं है, पार्टीशन नहीं है, सेंटर मैनेजर का रूम पूरा खुला है, दिख रहा है, तो इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं होगा ना। पढ़ाई तो उनको क्लास में करना है, लेकिन एडमिशन तो उनको यहीं पे लेना है ना। पढ़ाई तो क्लास में करेंगे, लेकिन पहला एडमिशन, पहला मोमेंट ऑफ ट्रुथ तो ये है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी की। सो बिफोर आई गो इन फॉर अ प्रेजेंटेशन, यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड से हैं, जैसे मैं हूं। काफी सारे लोग यहाँ पे होंगे एंटरप्रेन्योर्स जो कि बिजनेसमैन है, काफी सारे लोग होंगे हु आर वर्किंग। सो आई टेल यू द फर्स्ट थिंग व्हेन यू walk in, first thing when you walk in to your office, if you are working and you are not smelling good, if you are not reaching on time and you are not properly groomed, it is creating a brand unconsciously for you and impact बहुत पॉजिटिव नहीं है सर। सॉरी टू से, इंपैक्ट उसका पॉजिटिव नहीं। अगर कंसिस्टेंटली ऐसा है, एक आध दिन ऐसा हो गया, हर एक इंसान से होती है, बट ये एक जेनरिक हो जाएगा तो ये आपका ब्रांड बन जाएगा, आपकी पहचान ये बनेगी कि ये तो बंदा हमेशा लेट ही आता है और इसका कपड़ा हमेशा बिखरा हुआ रहता है। कपड़े बिखरे हुए इंसान लेट आते हैं, यही इनकी पहचान है। नाउ फ्लिप साइड, if I am going for an interview, wherever I am going, I am always prepared. I look at the website, I look at the background of the organization, I look at the spell check when I am sending my profile. तो स्पेल चेक करते हैं, कोई स्पेलिंग एरर नहीं होती है मेरे सीवी में, और मैं अपने प्रोफाइल को जो जॉब के साथ जिसमें अप्लाई कर रहा हूं, प्रोफाइल को मैच करके भेजता हूं। ये होती है प्रिपरेशन सर, ये आपकी ब्रांड है। एक फैसिलिटेटर जो यहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, हम कोई नए क्लाइंट के पास जा रहे हैं सर, वो क्लाइंट का ट्रेनिंग है 9:30 बजे, हम सर पहुंचते हैं 9:29 पे और हम बोलते हैं सीना चौड़ा करके, भाई 9:30 बजे हमारे प्रेजेंटेशन है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, बट एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग, I am not apologizing. I am saying it sarcastically, but please try to understand. I am sure there is no one here who does it, but I know few people who do it, who are not there in this presentation, but I know myself, and I've told them in no uncertain ways, sir, ये हाथ जोड़ के बता रहा हूं, ऐसा मत करिएगा. It's a bad name for the industry, especially learning and development. तो 9:29 पे पहुंचते सीना तोड़ के, हम तो पहुंच गए सर 1 मिनट पहले सर. Now at 9:29 that person will make the laptop ready, पावर पॉइंट खोलेंगे, फिर अपना वीडियोस को चेकिंग करेंगे, फिर रूम के अंत तक साउंड पहुंच रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। इतने में हमारे ट्रेनिंग्स पहुंच गए, सारे हमारे ट्रेनिंग्स सब पहुंच गए और उनके सामने ये सब चल रहा है, ठीक है। फिर अपना टाई पहनना भूल गया, बाहर गर्मी था, तो अब जाएंगे सर, जाएंगे टाई पहनने, फिर जाएंगे, फिर थोड़ा सा those who smoke they will go for a smoke, those who don't smoke they will go for a cup of tea, coffee, ये सब करके मिल मिला के बोलेंगे सारे तो नहीं आए थे इसलिए हमने 10 बजे शुरू किया था। ट्रू, 2 जने नहीं आए थे, लेकिन 2 जने नहीं आए थे इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेनिंग रूम के बाहर जाएंगे और हम ट्रेनिंग से 1 मिनट पहले आएंगे। मैं तो कुछ लोगों को ये भी देखा हूं 15 मिनट बाद पहुंचते, बोलते मैं ट्रेनर हूं, मैं फैसिलिटेटर हूं, मैं थोड़ी ना पहले पहुंचूंगा, मेरे को 10 मिनट लेट पहुंचना चाहिए, तब जाके अहमियत बढ़ती है। योर चॉइस, बट बाय रीचिंग 10 मिनट्स लेट, that is also a brand you are creating. By reaching half an hour early is also a brand you are creating. Which kind of brand you will or you aspire to create is your choice. It's your world, it's your life. But both of them are a brand.
and both of them are identified with. That's the choice that we make. How security interacts is also a matter. Tusharji, completely agree with you. Keeping net clean and presentable, yes, presentable, keeping ourselves presentable also creates a brand. Of course, definitely. Maintaining the image is more important than creating first impression in a long way. Yes, Vishalji, I agree, but इमेज मेंटेन करने से पहले पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा ना, इमेज तो बाद में आती है, तो पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा. Okay, so we will move ahead and I'll share the screen with you. We have come to the last portion, so we will move ahead. Right. So what are the aspects? The first aspect is, and this is the part which I wanted to share with you, is script. First is the agenda. When it comes to A, the first and the most important thing is you should assess. Now you must have an agenda for presentation. And पहला चीज है, जो भी इंडस्ट्री में आप डेंट करने वाले हो, जो भी इंडस्ट्री में आप एंटर करने वाले हो, चाहे आप नया जॉब के लिए हो, चाहे आप कहीं पे बिजनेस करने जा रहे हो, कहीं आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, कहीं आप खुद को लॉन्च करने जा रहे हो एज अ ब्रांड, एक्सक्यूज मी, असेस दैट इंडस्ट्री. असेस मतलब इंडस्ट्री के बारे में जानकार बनिए. सो हिस्ट्री के बारे में जानना है, करंट ट्रेंड्स के बारे में जानना है, खुलासे से, विद डिटेल्स. यू शुड नो एवरी एस्पेक्ट. जी, जेनरेट क्यूरियोसिटी. तो अपने बारे में क्यूरियोसिटी जनरेट करो. आज के जमाने में हमारे टीम मेंबर्स जो है, दे आर ऑलवेज एवरीवेयर स्प्रेड ऑन दी सोशल मीडिया, creating a brand on the social media, creating curiosity. They are creating teasers for themselves. People who are into business, they are creating brand identity. If there is a new film to be launched, आज के जमाने में YouTube में हम पहले उसका टीजर लॉन्च करते हैं, टीजर से पहले एक मिनी टीजर लॉन्च करते हैं, मिनी टीजर के और टीजर के बाद हम उसका ट्रेलर लॉन्च करते हैं. कुछ कुछ मूवीज तो टीजर, मिनी टीजर से पहले एक सॉन्ग लॉन्च कर देते हैं. तो ये सारा है जनरेटिंग क्यूरियोसिटी. कहीं नई बुक लॉन्च हो रहा है तो बुक का कवर हमने कहीं पे लॉन्च कर दिया, किताब के बारे में एक लाइन हमने कहीं पे छपवा दिया, दैट इज अ टीजर. इट्स एन ई बुक, उसके बारे में हमने टीजर लॉन्च कर दिया. सेकेंड इज ई इज एंगेज. हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो हमारे सामान या हमारे सर्विस या हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उनके साथ हमारा एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज निगोशिएट द बेस्ट डील. अपने लिए ना, व्हेन आई एम टॉकिंग निगोशिएटिंग द बेस्ट डील is not negotiating in terms of price or negotiating with our future customer, negotiating with yourself to finalize the exact price of your product. That is negotiating. यानी कि खुद के साथ ये जानकारी हासिल करना कि मैं अगर अपने आप को लॉन्च कर रहा हूं तो इस वक्त इतना प्राइसिंग होनी चाहिए, 4 साल बाद मैं इतना प्राइसिंग, आफ्टर हैविंग लुक्ड एट माय सिनेरियो, मैं इतना प्राइसिंग रख सकता हूं. So that is negotiating. Then is D, dealing. Dealing not in terms of exchange, transaction, कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं. Dealing is dealing with change, तब्दीली. मैं यहां पे हूं, मैं अपने आप को उस पायदान पे पाना चाहता हूं, तो what are the changes that I need to make? That is D, deal. And A is attain. That is expertise handle करना, niche अपने लिए create करना. तो मैं एक बिजनेसमैन हूं इन द आईटी स्पेस और मैं आईटी एप्स बनवाता हूं, लेकिन मैं किस ढंग का आईटी एप्स बनाता हूं? आर दीज ई कॉमर्स एप्स, आर दीज एजुकेशनल एप्स, आर दीज एप प्लेटफॉर्म्स व्हिच आई एम क्रिएटिंग, आर दीज ई बुक्स क्रिएटिंग, आर वी क्रिएटिंग ई लाइब्रेरी सॉल्यूशन, राइट? And some of my friends here in the training program might be smiling because I mentioned e-library solution. At least one of you must be smiling because that person is already in that. So I took the liberty of taking that example, right? तो ये हो गया आपका एजेंडा. तो इसके लिए आपका सोच क्या होगा, ये मेरा थॉट है. ये सारा चीज आपको, if you think that agenda is something which you will find the acronym of agenda in YouTube or acronym of agenda in Google, you will not find it. This is something which is on a well thought of experience from me, from my end. ये मेरे एक्सपीरियंस के तहत मैंने इस एजेंडा को लिखा है. सिमिलरली यू हैव द स्क्रिप्ट. तो जैसे कहानी की स्क्रिप्ट है, अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट अपने हाथ से हम लोग लिख सकते हैं. स्क्रिप्ट में एस होगी, स्ट्रेटेजाइज. हमको हमारे लॉन्ग टर्म के बारे में स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम लॉन्ग टर्म में हमारी विजन क्या है, कहां तक पहुंचनी है.
तो उसके लिए हमको उस एंगल से स्ट्रैटेजी बनाना है। हमको कॉन्सेप्चुअलाइज या कस्टमाइज करना है। तो कॉन्सेप्चुअलाइज या कस्टमाइज अगर करना है तो व्हाट इज माय विजन, हमारी विजन क्या है, हमारी कस्टमर की जरूरतें क्या है, वो हमको जानना है। आर इज फॉर रिसर्च, यानी कि रिसर्च मतलब मार्केट की इंटेलिजेंस के बारे में हमको जानकारी हासिल करना है, हमको हिस्टोरिकल रेफरेंस के बारे में जानकारी हासिल करना है, और ट्रस्ट एंड प्रोसेस डिसिप्लिन इंस्पायर करना है। यानी कि अगर हमको ट्रस्ट हासिल करना है तो पहले तो मैंने बहुत अच्छा कुछ काम कर दिया तो लोगों को इमीडिएटली मेरे ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट तभी आएगा जब मैं कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करूंगा। प्रोसेस डिसिप्लिन, यानी कि विराट कोहली ने अंडर 19 कैप्टन होकर वर्ल्ड कप इंडिया को जिता दिया, लेकिन उसके बाद वो लगातार फेल करते गए तो उनको टीम में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लगातार उसके बाद वो एक के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस देते गए और तरक्की करते गए अपने परफॉर्मेंस में, तो इंडिया की कैप्टन बन जाएंगे, जो कि वो बन चुके हैं। और इंडिया के कैप्टन बनने के साथ साथ वो एक प्राइवेट आईपीएल टीम की भी कैप्टन बन चुके हैं, और उसके साथ साथ ही हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील for the entire fraternity of cricketers all across the world. Now, why that happens? Because that person has been able to inspire trust and process discipline. फिर पोजीशन, हमारी जो विजन है उसके हिसाब से हम लोग हमारी प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करेंगे। पोजीशनिंग के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रीट। हर एक स्टेप को हम लोग एजेंडा के हिसाब से देखेंगे, यानी कि एजेंडा हमने लेफ्ट हैंड साइड में एजेंडा का एक्सप्लेनेशन दे दिया। एजेंडा का मतलब होता है पर्पस। तो मैं जो भी करूंगा हर एक चीज को पर्पसफुली करूंगा। तो मैं आपको भैया फिर से रिपीट करता हूं, हमको एजेंडा डिसाइड करना है, यानी कि असेस इंडस्ट्री को, जनरेट क्यूरियोसिटी, एंगेज हमारे फ्यू प्रोस्पेक्ट्स जिसके साथ हम लोग बिजनेस करेंगे, एंड इज निगोशिएट द बेस्ट डील, डी इज डील विद चेंज, यानी कि जो तब्दीली लाना है वो लाएं, ए इज अटेन, यानी कि एक्सपर्टीज और निश कैसे अटेन करेंगे, देन वी विल हैव टू राइट आवर ओन स्क्रिप्ट, अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखेंगे। सो व्हाट वी विल डू, एजेंडा जब डिसाइड हो गया तो अपना स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, हम लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ हम लोग स्ट्रेटेजाइज करेंगे। वील स्ट्रेटेजाइज विद अ लॉन्ग टर्म विजन। With C, we will conceptualize and customize. How we will customize according to the need of the situation, according to the need of our stakeholders, our partners, our clients, our customers. We will change and conceptualize basis our vision and customer needs. Then we will do the research in order to find out intelligence from the market. क्या हरकत हो रही है, कंपटीशन कैसे आगे बढ़ रहे हैं, पहले क्या हुआ था, अब ये प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त क्या क्या नए फीचर्स ला सकते हैं, मार्केट में आज भी पेन फैक्टर कौन सा है, कस्टमर का पेन एरिया कौन सा है जो कि अभी तक किसी ने देखा नहीं। दैट पेन कैन बी, कैन आई एड्रेस दैट पेन, कैन आई ब्रिंग अ सोल्यूशन टू दैट नीड, दैट इज द मार्केट रिसर्च। देन इंस्पायर, ट्रस्ट और प्रोसेस डिसिप्लिन, कंसिस्टेंटली हम इंस्पिरेशन लाएंगे, लोगों में हम विश्वास पैदा करेंगे और उस विश्वास को बरकरार रखेंगे बकायदा, दैट इज प्रोसेस डिसिप्लिन। P is positioning or creating that brand position which people identified with, especially my target segment and my existing customer. That's a positioning I will create for my brand. And finally, I will treat every step as an agenda. Right. So now I hope that part study says Vibhav. Vibhav also says creative use of acquired information leads to a proper launch. Agreed. Good to see the agenda details. Thank you so much, Tushar. Vishal says it is about real to people. Small things ignored get the entire workshop crash. Absolutely. If small things are ignored, whether it's a workshop, it's a workshop, or it's a business, or it's a product, or it's a day. If there are small things which are ignored, it could crash your entire day. Very simple. You're going in for the most important presentation of your life. You forget your laptop. You arrive at the workplace and you understand that you happen to know that you have not only forgotten your laptop, you have even forgotten to get the pen drive on which you had stored it. And on your phone also, you did not take a soft copy. And it is not either on your mail. What is going to happen? It's going to lead to a lot of face loss, right? So that's his consistency of discipline. That is discipline, because had you been disciplined, you would have planned. Had you planned, you would have kept things ready. You would have put the laptop in the proper place. Due to hurry in the next day, you would have. So time management would have been there, and so on and so forth. If you're there, my system wanted me to be away for some time. I am not at all stressed. I'm not at all feeling tired. I'm completely energized. I don't know why the system wanted to give me this relaxation. I did not want to go for this relaxation, but I will steal a line from a movie of Shah Rukh Khan. No, I'm not a fan by any means, but yes, he's also a brand. He happens to be a brand. I'm sure a lot of you might appreciate him,
but there's this particular line which happened to be very famous. So वो कहीं पे बोलते हैं कि बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी चीज होती रहती है, तो बड़ी बड़ी शहर है और छोटी छोटी चीज हो चुकी है. So please, apologies on behalf of the system, though it was not anyone's fault at all. If network fails, we cannot do much about it, right? I hope all of you are able to see me. I believe there are people who are still logged in. So we will come to the last part, which I was sharing, the last slide. Yes. So how critical is presentation? So when that question comes in, there is a thought which comes in our, in our head. There are few things which comes in our mind. And how critical is presentation? Well, as we have discussed now, वो हमारे gateway है to success. Right or wrong? Yes, it is a gateway to success. वो हमारी ब्रांड बनाती है. अच्छा, वो प्रोडक्ट है. अरे हाँ हाँ, अरे यार तुम तो आंखें बंद करके उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हो. अरे वो प्रोडक्ट है, प्लीज डोंट गो फॉर इट. आई हैव बीन चीटेड. देयर आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी बैड. If your mobile does not work, then you are in for trouble. उनका spare parts रहता ही नहीं है. So forth. So that is a brand identity which is created. I hope the team is there on the call. I believe yes. I can't see the chat box though. I hope we are all there in sync and we are there. Can anyone please respond on the chat whether you are able to hear? Yes. All yes, sir. We are able to hear you. Brilliant. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So Tushar, Satish, Savar, everyone is able. Yeah, we are audible. Thank you. Thank you. So brand identity retention, recall factor is there. Then segment. अब ये एक स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं है कि दिस हैज बीन सेड बाय अ पर्सनालिटी एंड देन इट हैज बिकम आइकॉनिक. But this is a much belief statement. Think clearly. The brand chooses its customers rather than customers choosing their brand. अब ये बात आप लोग बोलोगे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है. हम तो डिसाइड करते हैं ना हम कौन सा ब्रांड पे जाएंगे. भैया ब्रांड तैयार करते वक्त ना, जो उस ब्रांड को तैयार करते हैं वो पहले ही सोच लेते हैं कि कौन से कस्टमर इस ब्रांड को लेंगे. तो एक्चुअली ब्रांड पहले ही वो कस्टमर सेगमेंटेशन कर चुकी होती है. फिर जब हम वो ब्रांड की तरफ जाते हैं हम सोचते हैं हमने ब्रांड का चयन किया. भैया ब्रांड का चयन हमने नहीं किया. ब्रांड लॉन्च करते वक्त वो हमारा चयन पहले से ही करके रखा हुआ था कि इस सेगमेंट के कस्टमर को ही हम लोग रीच आउट करेंगे. जो सही से मार्केट रिसर्च करते हैं वो करते हैं और उस हिसाब से उस चीज को प्रेजेंट करते हैं. तो प्रेजेंटेशन इतना क्रिटिकल है कि पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा प्रिपरेशन एंड पर्पस उनके दिमाग में बैठा रहता है. तो वो सेगमेंटेशन करके उस सेगमेंट की और उस ढंग से उस चीज को पेश करते हैं. सो दैट इज प्रेजेंटेशन. And socially, yes, we have discussed, it will create respect, relationship, and esteem. So there is one last video which I wanted to share with you. I hope I will be able to share this video. I will try. In case it doesn't work, then I'll take your questions and then we can call it a day. So what we will do is we will move into this बिहेवियर. यस विभव, बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी आपसे सवाल है, आप जो भी शेयरिंग हुआ है इसमें आप किसी का कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है. अगर कोई थॉट्स या डिस्कशन है वो हम लोग आगे कर सकते हैं, बिल्कुल. बट इज देयर एनी स्पेसिफिक थिंग विच यू थॉट आई डिड नॉट कवर वेल और आई डिड नॉट गिव इनफ टाइम जिसमें देना जरूरी था? जैसे स्वाति ने बीच में पूछ लिया. थैंक यू टू thanks to Swati again because she asked specifically about what is positioning, explain positioning with example, जो मैंने करने की कोशिश किया. तो अगर कोई ऐसा चीज है तो आप बताएं. अगर आप लोग कुछ नहीं बताएंगे तो मैं assume कर लूंगा there is no area which you need specific clarity on. Of course the discussions can be on. Of course the presentation will be shared across you. Of course the audio and video files also will be shared across to everyone who were there in the webinar. That includes the team who were there in the WhatsApp canal. So it will be shared with everyone. Need not worry. But apart from that, any other expectations? कोई ऐसा expectation है जो कि जिसके बारे में आप लोग
एक्सपेक्टेशन लेके आए थे जो अब तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हमने बढ़ाया था आपका टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आप कैसे अपनी बेहतरी पाएंगे, आप अपनी जिंदगी में कैसे 3 पीस को पाएंगे। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, पर्पस, प्रेपरेशन, पोजिशनिंग। ये 3 के लिए हम लोग 2 एरिया के बारे में बताए हैं मोडस ऑपरेंडी। एक है हमारा वर्बल और एक हमारा नॉन वर्बल। तो हम लोग कई बार होता है कि वर्बल चीज को ही प्रेजेंटेशन समझते हैं, बाकी जो नॉन वर्बल है उसको हम प्रेजेंटेशन की अहमियत देते नहीं है। तो खाना परोसना इज नॉट प्रेजेंटेशन, कपड़ा पहनना इज नॉट प्रेजेंटेशन, गिफ्ट देना इज नॉट प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग करना इज नॉट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होता है जब कम्युनिकेट करते हैं, जब लोगों के सामने हम वर्बली कुछ बताते हैं तो प्रेजेंटेशन है। आई सेड दैट इज अ वेरी स्मॉल डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट इज मायोपिक विजन। वी आर लुकिंग शॉर्ट साइटेडली। तो फार साइटेड ये है कि प्रेजेंटेशन का दायरा बहुत बड़ा है, इट्स वेरी बिग, वेरी लार्ज, the territory is huge, right from a product launch to launching a career to launching starting a new business to going for a new life. Even when 2 people are getting married, that is also a form of presentation, because the bride presents himself or herself and the groom presents. If there is a newspaper ad for marriage, that is also a presentation. So all this is presentation. Your resume is a presentation. How you recite in school is also a presentation. How you wear your uniform and what kind of shoes, how you polish it is also presentation. How regularly you go to office on time is also presentation. How irregular you are in terms of doing your work is also presentation. How as a housewife you serve the people who come to take food in your house is also presentation. So the presentation has this entire gamut. तो उसमें हमने 2 एरिया देखा, एक देखा एजेंडा। तो जब तक हमने एजेंडा तय कर लिया तो एजेंडा के बेसिस पे हमने स्क्रिप्ट को तैयार किया। तो एजेंडा में क्या क्या था वो हमने डिटेल में डिस्कस किया, स्क्रिप्ट में क्या क्या था वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो एजेंडा स्क्रिप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, और फिर लास्टली वी फाउंड आउट that how this is going to impact us as a brand, how this is going to bring about success, how this will affect our top and bottom line, how this is going to give us social status and value, and how in our careers it's going to make a difference. तो एक जाने से पहले I thought would you please be a little more specific about don'ts. Making new contacts and sustain it is also a presentation. Absolutely, Tushar, completely agree with you. Absolutely. See, consistency is the in thing, Tushar. So if you have made new contacts, you ought to be in touch, and not only for purpose. I know a lot of people who keep on presenting themselves in a very positive way. They use every other, agenda to get in touch with these people, which are anything other than business. So they don't talk business, but they, send a birthday message. They send a festival wish. They do not go and visit their customers and prospects on a regular basis, but they stay in touch with an ex-customer, so that they get repeat business from them. How do they do that? They build relationships. Absolutely agree with you. Anything and everything in presentation is to do with relationship. So we do a proper presentation in order to build a relationship. If there is a webinar happening like I am doing, what is the relationship going to build in me? I'll be very categoric. If I have got good relationship with you, if you have enjoyed this, if you felt that this has added value to your life, then tomorrow there might be a coaching session or a coaching module which is there, which you might consider. Okay, Abhishek Sengupta जी का coaching module में हम लोग जरूर एडमिशन ले सकते हैं, इससे मेरे करियर में बढ़ोतरी होगी. I mean very open. Somebody might feel no, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया अच्छी है, लेकिन कोचिंग मॉड्यूल में जाने की हमारे कोई जरूरत नहीं है. I don't need. Whatever value addition happened in the course of the webinar was good enough. So now this is how is the agenda. This is how the script works. Now there is a question which Vaibhav has asked. Could you be please more specific about don'ts? Don'ts in what? Don'ts in terms of what? Vaibhav, I did not understand. Don'ts in terms of presentation. भाई ये भी बहुत बड़ा है. ये तो समुंदर है. Yeah, Tushar. Yeah, most welcome. You said thank you. I say most welcome to you. But ये तो समुंदर है सर. तो लास्ट पी तो मैंने बोला था पोजिशनिंग. मैंने आपको बताया पोजिशनिंग 3 पी है ना. पहला पी था पर्पस, सेकंड पी है प्रेपरेशन, थर्ड पी था पोजिशनिंग. तो ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. डोंट्स, वैभव, डोंट्स प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे डोंट्स है. मैं तो पहला बताऊंगा, लैकडेसिकल नहीं होना, कैजुअल नहीं होना, अप्रोच प्रोफेशनल रखना, चाहे जो भी प्रेजेंटेशन हो. चाहे खाना भी पका रहे हो, प्रोफेशनल होनी चाहिए. आप बोलेंगे प्रोफेशनल मतलब टाई और ब्लेजर पहन के जैसे आप बैठे हैं, नहीं सर, वहां पे जरूरत नहीं है. लेकिन सफाई की जरूरत है. तो हाइजीन, अगर खाना पका रहे हैं तो हाइजीन, मतलब अपने सर के बाल झड़ के वहां पे खाने में गिर गया और 50 लोग को खाना खाने के लिए बुलाए हैं, तो वो फ्री गिफ्ट में बाल नहीं दे सकते ना, अपने सर से बाल उतार के नहीं दे सकते. सो दैट इज बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग केयरफुल. सो यू वेयर अ हैट, इफ पॉसिबल वेयर अ ग्लव्स. घर के लोगों के लिए शायद हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक, राइट.
So these are the don'ts. So, you should be clean. You should ensure that the containers are clean, that is hygienic. So the don'ts are, don't be unhygienic. Don't be unhygienic, right? So I avoid using the negative intonations. So I did not speak of the don'ts, I spoke of the do's. So the do's should make it obvious. Can you add something which we can use in our office while preparing reports? Use pragmatism, use positivity, Satish ji, use a lot of self-belief. This is the approach. The more important is, what are the reports which are required in your office? What kind of reports you are preparing? Now, is it related to data? If it is related to data, then you have to do extensive research and find out कि data validates the purpose, right? तो data जो है आपके पास, क्या data है, क्या data की जरूरत है, और किस data के ऊपर research इससे पहले नहीं हुई है, क्या उस चीज की गुंजाइश है कि हम लोग नया data के ऊपर काम करके हमारे report को और pragmatic, practical बना पाएं. अगर ऐसी गुंजाइश है तो हम नया रिपोर्ट उस ढंग से तैयार करेंगे, उस डेटा की इस्तेमाल करेंगे. ये हो गया सतीश जी. डज इट आंसर योर क्वेश्चन? अगर वो डेटा ड्रिवन नहीं है तो रिपोर्ट के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर जाएंगे, लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी देयर हैज टू बी सम फैक्ट्स. बगैर फैक्ट का जो होता है वो एक फिक्शन किताब जैसा होती है. फिक्शन किताब में हम लोग कई सारी चीज लिख सकते हैं. वी हैव द लाइसेंस टू यूज फिक्शन, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे, हम लोग फैक्ट के बारे में. तो यू विल हैव टू यूज फैक्ट्स. डेटा इज द बेस्ट काइंड ऑफ फैक्ट. Data integrity, absolutely right, Tushar. Data has to be having integrity, purpose, and it should be genuine. If it is there, then it works fantastically well. Thanks, Satish. Most welcome. My pleasure. So we will come to the last sharing. I guess there might be more questions, but we can take it later because we are well past 6:20. I had promised 6:10. I believe there are other people. Don't try fake. Kailash says, "Bilkul Kailash ji, I completely agree. फेक से कुछ हासिल नहीं होता है." तो हम ये वाला, मैं तो बहुत मतलब क्या बताऊं, मैं एकदम अंदरूनी मेरा इच्छा है कि ये आप देख पाए वहां से, लेकिन किसी वजह से अगर देख नहीं पाते हैं तो मैं ये आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा. ओके, सो apologies again. I tried minimizing the browser. I tried everything. A very heartfelt thanks to all of you. I hope we've been able to engage in the manner which I had desired. Many of the people who were there with me on the WhatsApp have not gotten into the chat box as frequently. I believe in the WhatsApp our discussions might have been fruitful. I thought the script and the agenda part was something which we had not discussed yesterday. And many of the examples which were shared today was not something which were covered yesterday. But we had a very extensive discussion on WhatsApp as well yesterday. So they have been quiet. Probably they have not engaged as much because most of the things were reiterated. I believe that it has been very for you as well, the people who were there in the WhatsApp. For the others, Vishalji, thank you so much. I know. Thank you for mentioning, no problem. I hope it has not been a problem for you. I hope the learning has been as comprehensive as promised. I believe most, if not all of your expectations have been fulfilled. In case it hasn't, thank you, Kali Prasad. In case I have not been able to address any of the solutions which I had promised or set out to, please reach out to me. I am always open to discussions and addressing your queries and clarifying your thoughts. Not just on WhatsApp, but even on call. My number is there on the group. I have shared it here also on the chat box. I repeat, it's 98747 33112. It is 98747 33112, and the name's Abhishek Sengupta, in case you've not got it. Thank you so much to the entire team. And I don't believe thanks should be shared just verbally. It should be shared this way. And there's a thought of Jeff Bezos. This is a thought which I would like to share with you. So I would leave you with that thought and leave you with the thank you screen as well, because I have said communication is, and just have this thought. Your brand is not what other people say about you. It is what other people say about you when you are not in the room. So actually, your brand is what other people say about you when you are not in the room. That is Jeff Bezos. आपके सामने तो लोग आपको खूब वाहवाही देंगे, खूब अच्छा बताएंगे, खूब अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपके बारे में सच्चाई बयान तभी करेंगे
जब आप कमरे में नहीं होंगे, यानी कि आपके पीठ पीछे वो आपके बारे में बताएंगे, तो वो आपकी ब्रांड की सच्चाई है। जो इंसान ब्रांड की इस सच्चाई को बगैर तसल्ली दिए अपने दिलो दिमाग में, अपने होश में, हवास में उस चीज को मान सकते हैं, वो अपने ब्रांड को और कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। और ये ब्रांड पहुंचाने की कामयाबी अपने प्रेजेंटेशन की तहत ही वो कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन हम लोग हर एक जगह पे करते हैं, और तभी जाके हम उसको आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन बोलते हैं। So with that, we come to the end of this webinar. Thank you once again. Thank you for your one sharing true. Raja ji, thank you. Vishal ji, Kali Prasad ji, Vaibhav ji, Tushar ji, Swati ji, Satish ji, everyone, your heartfelt thanks, and the entire team who were there on WhatsApp yesterday. I believe they were also logged into webinar. I did not see them here though. Some of you, but many of you. Ashish ji, thank you so much. Ashish ji was there yesterday also. So all of you who were there yesterday and all those who have been there on both the days as well as today, thank you once again. Take care. Good night. Stay in touch. Shabba khair. Good night. Bye-bye.